अ, पहली चीज़ ये नमस्ते सबको। पहली चीज़ ये है मैडम, ये मार धाड़ वैसा हम सोचते नहीं, क्योंकि उसके पीछे अगर इमोशन हो तो सबको लगता है कि करना है। सो इट इज़ मोर लाइक अ बैटल। बैटल में मार धाड़ बैकग्राउंड को चला जाता है, पर्पस बहुत हमेशा आगे आ जाती है। जो भी वॉर करते हैं और ये करते हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट एक्शन ऑन स्क्रीन, एक्शन फिजिकली, मेंटली भी बहुत एक्शन है। जो उसको चाहिए, उसका प्रॉमिस जो उसने दिया है, उसके लिए जो भी टक्कर आती है, जो भी मुश्किलें आती है, सब पार करके वो माँ का व्हाट इज हर एक ड्रीम को पूरा करने की मेहनत कर रहे। एंड व्हेन वी से एक्शन, इट इज स्टाइलाइज्ड, you know, it is not something where you feel awkward. Or I always do films where I feel I can watch it with my family audience should enjoy, only then that number you will get. And that is the main purpose. But as he rightly said, the presentation, or we focus on masses, सीटी बजा के, ताली बजा के, नाच के थिएटर में सिनेमा देखना है। और उसके बाद भी there should be a strong content. If you see the thought process in this film, every dialogue will have a thought process where you can relate to any profession. So there is so much of writing. And in previous question you asked about the dubbing and this thing. I really appreciate that you have noticed that, because more than Kannada dubbing, our team has spent more time on concentrating on dubbing, because we need to respect the nuances of every language. And if we have to touch their heart, so we have to be right. So a lot of people have worked hard, Dr. Suri, and in every language there are few people who have really worked hard for that. हमारे ओरिजिनल रॉकी के साथ काम करना आपको कैसा रहा? बहुत खुशी हुई, because you know, you get to learn a lot from him, the way he dedicated, the way he committed himself in spite of there was extreme conditions. जैसे हम शूट करते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं होता क्योंकि इट इज़ नॉट नथिंग। सब बोलते होगे ना, शूटिंग में पिकनिक जैसा था, आराम से मज़ा करके शूटिंग किया। आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वेर इन दैट मोड, बिकॉज इट वाज सो डिमांडिंग. एंड आई थिंक ही सेट अ एग्जाम्पल. दैट इज़ समथिंग विच वाज which I will have it for a very long time. I'll remember it for a very long time. प्रशांत here सामने. प्रशांत आपके सामने यहाँ पे मधु BBC हिंदी से यहाँ पे. हाय. ट्रेलर तो अमेजिंग था ही, लेकिन ये जो गाना हमने देखा वो भी दिल को छू गया और इमोशनल कर गया हम सबको. मेरा सवाल ये है कि अगर मैं विजन की बात करूँ तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 का क्या विजन रहा आपका? और जैसे हमने कोल माइल्स की कहानी हमने देखी है यहाँ पे, और इमोशंस हमने देखा है कि भरपूर है. वो इमोशन जो शायद अब हमें फिल्मों में इसके ज़रिए, और माँ बेटे का इमोशन हो या जो कहानी कहने का इमोशन है, वो साफ दिखता है. इस विजन के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे. This vision was made before we started chapter 1. Chapter 1 first half, we have only told half the story. So we are not going out of context from what we have shown in chapter 1. When you watch the movie, you'll understand that, you know, the scale or the new characters that have been introduced, it probably could have just been one movie that you were watching. So when you talk about the emotion, the mother's emotion is probably primary for this movie, and that has been very consistent for us. When you talk about the scale, it was always meant to be like that. There was no separate planning for just for chapter 2. ಹಲೋ ದೀಪಾ ಮಾತಾಡೋದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟುಡೇ ಮ್ಯಾಗಝೀನಿಂದ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಅಲಿಯಾಸ್ ಯಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. KGFದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಅಂತ? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ KGF ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು. ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ KGF ನಾವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ KGF 2 ಇಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಯ್ತು, ಹೇಳೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड। मेरा सवाल संजय सर से है। सर, अगर मैं बात करूँ आपके लुक की या डायलॉग की, तो अग्निपथ एक ऐसी फिल्म है जहाँ आपका लुक और डायलॉग सब काफ़ी ज़्यादा पसंद गया था, और जब हम ट्रेलर देखते हैं तो फिर एक बार आपका जो लुक है वो फैबुलस है और डायलॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेस्ट पार्ट आपके लिए इस फिल्म के अंदर क्या है? बेस्ट पार्ट ये फिल्म में इसकी कहानी है, इसका इमोशन है, और मेरे को स्टार्स हैं, यश है, श्रीनिधि, रवीना जी, और सबसे बड़ा जो हीरो है वो प्रशांत है, जिसने इसके बारे में सोचा। यश सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि आरआरआर ने एक ट्रेडमार्क जो है वो ऑलरेडी सेट कर दिया है ब्लॉकबस्टर हिट करके। कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील कर रहे हैं अब, क्योंकि एक रिकॉर्ड ऑलरेडी सेट है और केजीएफ से लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है कि हर कोई अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ केजीएफ 2 ही तोड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील करते हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं, I don't know, I don't look at it as a pressure, it's a pleasure, सबको entertain करना. So more number of people, if they like it, that is where we concentrate. Of course numbers will come. What I believe is, once the movie is released and if that works, if they like it, then they will promote the movie more than me. So then it is left to them how many people will reach it. So it's all this thing in initial stage pe. But yes, of course we are expecting a huge number. I never think like we have to break this record or that record. I'll only think about the potential of the industry or potential of what we have done. And record बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, रिकॉर्ड तोड़ने का सोचता ही नहीं मैं. नया रिकॉर्ड बनाना है, मतलब everybody should do that. Whoever comes after us also, they should pass that thing and set a new benchmark so we can aim at bigger things. That's how I look at things. Yash. Hello. Yeah. Hello. Yash, Srinidhi, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಿಸ್ತಾರ್ತೀರಾ? Thank you. Welcome. So my question is to you, Yash. So as we are seeing many pan-Indian movies are coming, जो साउथ स्टार्स हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, काफ़ी एक्सेप्टेंस और प्यार मिल रहा है. So can we expect in future that you would like to collaborate with some Bollywood director? I mean Hindi Yeah, director, okay. Yeah, why not? See, I always believe it is director's vision. And as an actor, you are only as good as your movie and as good as your director can imagine.